Welcome to Mishika classes. Our today's topic is full form of computers, part number 2. Some of the full forms regarding computer we have discussed in our previous class. Now we are going to discuss later on some new full forms regarding computer. हमने अपनी पहली वाली क्लास के अंदर कुछ कंप्यूटर की फुल फॉर्म्स पहले ही डिस्कस कर ली हैं. अब कुछ और फुल फॉर्म्स आज हम जानने वाले हैं, इनको डिस्कस करने वाले हैं. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. First is full form of SMPS. What is the full form of SMPS? S stands for switch, M stands for mode, P stands for power and S for supply. The full form of SMPS is switch mode power supply. And what does it functions? इसका क्या function है? ये basically क्या करता है? It regulate the power supply. ये पावर सप्लाई को रेगुलेट करता है. जितनी हमारे सिस्टम को आइदर इट इज अ कंप्यूटर आइदर इट इज अ लैपटॉप, जितनी भी हमारे सिस्टम को रिक्वायरमेंट होती है पावर सप्लाई की, ये उतनी में कन्वर्ट करके इफेक्टिवली, ताकि हमारा जो सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क कर सके, उसको प्रॉपरली रेगुलेट करता है, उसको रेंज में रखता है. उसकी जो वोल्टेज है, जितना भी सिस्टम है, इंडिया में हम रहते हैं तो इंडिया में सबको पता है कि वोल्टेज के अंदर फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा रहती है. तो उन सबको रेगुलेट करना, उसको प्रॉपर्ली हमारे सिस्टम पे कोई इसका एडवर्स इफेक्ट ना पड़े, उन सबको मैनेज करने का काम कौन करता है? SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई. नाउ द नेक्स्ट इज पोस्ट. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ POST? पोस्ट. P stands for power, O for on, S for self and T for test. So what's post? Post is power on self test. It is checked by the computer. When the computer is on, turned on, then the booting is started by the operating system. That booting is first self test. The proper booting is done or not, that is done by the post. Post basically क्या करती है? जब हमारे सिस्टम को, हमारे कंप्यूटर को हम टर्न ऑन करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, आइदर इट इज अ लाइनेक्स, आइदर इट इज अ मैक, आइदर इट इज अ यूनिक्स, आइदर इट इज अ विंडोज, एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, तो सबसे पहले क्या होता है, उसकी बूटिंग होती है. बूटिंग का मतलब क्या होता है? पहले ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सिस्टम के अंदर प्रॉपर्ली इफेक्टिवली वर्क करना स्टार्ट करता है, बूटिंग होनी स्टार्ट होती है. उसके बाद जब बूटिंग हो रही होती है, उसके बाद ही हमारा सिस्टम जो काम करता है. तो जब बूटिंग हो रही होती है ना, तो उस टाइम पर प्रॉपर्ली वो बूट हो रहा है, प्रॉपर्ली हमारे सिस्टम में से कोई फाइल तो नहीं मिस है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई करप्ट तो नहीं हो गया, तो वो हमारा जो सिस्टम है वो हमारा सेल्फ टेस्ट में मोड में जाता है. दैट मोड इज कॉल्ड एज पावर ऑन सेल्फ टेस्ट. सबसे पहले पावर ऑन सेल्फ टेस्ट किया जाता है. इट मींस इट चेक दैट द कंप्यूटर इज रनिंग वर्क properly or not, computer is working properly or not. That is called post power on self test. Next is bias. What is the full form of bias? Bias. B stands for basic, I for input, O for output, S for system. So what's bias? Bias is basic input output system. It is again a software built in the computer. ये हमारा again एक software, जैसे post एक software the same वैसे ही it is also again a software that is built in the computer. What is its function? It is used to identify the configurations, the testings, that all the hardware which is connected to our system, which is connected to our computer, that all are working or not. इसका काम क्या है? वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक कर रहा था कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी इंस्टॉल्ड है हमारे कंप्यूटर के अंदर, पोस्ट का काम यही है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा. और बायस का काम क्या है? जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमारे सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, जितने भी हार्डवेयर हमारे सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, आइदर इट इज अ प्रिंटर, आइदर इट इज अ मॉनिटर, आइदर इट इज कीबोर्ड, आइदर इट इज माउस, एनी ऑपरेटिंग एनी हार्डवेयर, कोई भी हार्डवेयर है, वो सब के सब इसे प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर है या नहीं है. जैसे हम कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, इनके बीच में कम्युनिकेशन सेटअप होता है. क्या होता है? कम्युनिकेशन सिस्टम सेटअप होता है बिटवीन द मदरबोर्ड एंड द डिवाइसेस व्हिच इज कनेक्टेड टू द सिस्टम. जो भी सिस्टम के साथ डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं उनके बीच में क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है. एंड दैट इज चेक बाय द बायस. वो कौन चेक करता है? बायस चेक करता है, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. नाउ द नेक्स्ट इज यूएसबी. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी?
USB. U stands for universal, S for serial, B for bus. Universal serial bus. It allows the devices that it is controlled or it is communicate with our host system or with our PC. Basically क्या करता है? It provide the connection between the peripherals that is connected to our system like cameras, printers, scanners. Okay, these are the peripheral devices. The peripheral devices की जरूरत कहते हैं. What are the peripheral devices? The peripheral devices are those devices which are not mandatory for the working. जरूरी नहीं होते कि आपको जरूरत है तो ही आप लगाओगे. दैट आर कॉल्ड द पेरिफेरल डिवाइसेस. मेन डिवाइसेस होते हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ती ही पड़ती है. बट पेरिफेरल डिवाइसेस वो डिवाइस होते हैं जिनकी जरूरत जरूरी नहीं आपको पड़ेगी, या वो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि आपको लगाओगे तभी हमारा सिस्टम काम करेगा. तो दीज ऑल आर द पेरिफेरल डिवाइसेस. ओके, तो इन सभी को अगर हमें कंप्यूटर से कनेक्ट करना है तो वी आर कनेक्टेड विद द कनेक्टर. हमें कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी एंड दैट कनेक्टर इज कॉल्ड यूएसबी. उसी कनेक्टर को हम क्या कहते हैं? यूएसबी कहते हैं, यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी? यूनिवर्सल सीरियल बस. नाउ नेक्स्ट इज VGA. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VGA? V stands for video, G for graphics, and A for adapter. It is also called as a visual graphic adapters, or you can say that the video graphic array also. The all are the full forms of the VGA. VGA को ही सब कहते हैं. Video graphic adapter भी कह सकते हो. Okay, visual graphic adapter भी कह सकते हो. Or you can also say that video graphic array. Okay, what is the meaning of adapter here? अगर आपको ये समझ में आ गया, then you can easily understand the meaning. Okay, the adapter is a connector. What is the adapter? Adapter is a connector which is used to connect the video devices. What is the video devices? Like a monitor. Video devices क्या होता है? जिसके थ्रू आप देख सकते हैं. Okay, जो विजुअल आपको करने में हेल्प करता है, जो आपको चीज दिखाने में हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड द विजुअल और द वीडियो. एडेप्टर क्या है? वो कनेक्टर है जिसके थ्रू आप दैट डिवाइस कनेक्ट किए. आईबीएम ने क्या करा है? दैट डिफाइंस सम इनिशियल्स उसके डिफाइन कर दिए गए हैं, स्टैंडर्ड्स डिफाइन कर दिए, दैट आर नोन एज बीजीएस स्टैंडर्ड्स, जिसके बाद ही आप कनेक्शन कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट इज द लैन. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन? L stands for local, A for area, and for network. So what's the full form of LAN? Local area network. Now, what is the function? अब इसका function क्या? It is used to connect the devices, or you can say that it provides the physical connections between the many systems that like the buildings or in the office, in the schools, in the homes. Okay. तो बेसिकली करता क्या है लैन? लैन एक फिजिकल कनेक्शन प्रोवाइड करता है. जब आपके पास एक से ज्यादा सिस्टम्स होते हैं तो अगर आपने इनमें कनेक्शंस करना है तो आपका लैन का यूज करते हैं. ओके, जनरली जो लैन कनेक्शन होता है दैट इज इन द बिल्डिंग्स में होता है, या फिर ऑफिसेज में होता है, या आप कह सकते हो स्कूल्स में भी करा जाता है लैन कनेक्शंस. उनके साथ जो भी हमें डिवाइसेज है हम लोग किसी एक सिस्टम के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो सभी के सभी उसको यूज कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि आपको सभी के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अगर कोई ऑफिस है उसमें 10 पीसीज मैंने लगा रखे हैं और मेरे पास प्रिंटर एक है, तो वैसे तो मुझे 10 सिस्टम में 10 ही प्रिंटर की जरूरत होगी. बट इफ आई कनेक्टेड थ्रू द लैन, अगर मैं उनको लैन के थ्रू कनेक्ट कर दूंगी, देन वन प्रिंटर इज मोर देन इनफ. तब एक ही प्रिंटर काफी होता है. तो वो क्या करेगा? जो भी कनेक्शन देना वो सभी उसी प्रिंटर से दे सकते हैं. दैट इज कॉल्ड द लैन. इस ये काम होता है लैन का. तो लोकल एरिया नेटवर्क. नाउ नेक्स्ट इज द मैन. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैन? M stands for metropolitan, A for area, and for network. When the connection is set up between the cities, between the towns, then it is called the MAN. Metropolitan Area Network. What is the full form of MAN? Metropolitan Area Network. It is bigger than the LAN. ये LAN से बड़ा होता है. ये जो connection करा जाता है that is between the cities में किया जाता है. Okay. Now next is WAN. What is the full form of WAN? W for wide, A for area, and for network, wide area network. It transplant through the Wi-Fi. ये जो connection होता है ये Wi-Fi के through connect किया जाता है. That is a wide area network. Now, what is the full form of
Triple L, L L L. What is the full form of L L L? First L for low, second L for level, third L for language. Low level language. What is the full form of LLL? Low level language. It is also called as the MLL. इसको MLL भी कहते हैं, machine level language. Okay. It only understands the two letters, that is zero and the one. Binary language हम इसको भी कह सकते हैं, क्योंकि zero और one दो ही language इसको समझ सकता है. Our computer understand only this language. हमारा जो computer है, हमारी जो system है, operating systems है, वो सिर्फ यही दो word समझता है, zero और one. So, what is the low level language? It is also called the machine language. It is also called the binary language because it only understands the two letters, that is 0 and 1. So, what is LLL? Low level language. Now, what is the full form of HLL? HLL की full form क्या है? H for high, L for level, L for language. High level language. What is the full form of high level language? It is a English language. Okay, our computer understand only the binary language as it understand two words 0 and 1. हमारा जो सिस्टम है वो 0 और 1 ही समझता है, तो बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है. ओके, बट वी अंडरस्टैंड इंग्लिश, लेकिन हमको इंग्लिश समझ में आती है, मीन्स हमें समझ में क्या आती है, हाई लेवल लैंग्वेज. तो हाई लेवल लैंग्वेज रिक्वायर द ट्रांसलेटर विच ट्रांसलेट दिस हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द 0 एंड 1. हाई लेवल लैंग्वेज क्या करता है, वो हमारा जो भी हमने लिखा है उसको ट्रांसलेटर के थ्रू 0 और 1 में कन्वर्ट करता है, which is understand by our system, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम समझता है. then accordingly it works, accordingly it performs, उसके अकॉर्डिंगली ही वो काम करता है. उसमें कुछ स्टैंडर्ड्स हैं ट्रांसलेटर के अंदर जिनको पहले ही डिफाइन कर दिया गया है, और उन ट्रांसलेटर को हमें इजी बनाने के लिए सिंटेक्स के नियम से हम जानते हैं. हम क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कुछ सिंटेक्सेस होते हैं जिनको हम याद कर लेते हैं, तो वो जो भी हम लिखते हैं उनका मतलब पहले ही ट्रांसलेटर में फीड कर दिया गया इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1. उनकी जो है 0 1 की फॉर्म में कोडिंग कर दी जाती है. हमारा जो सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिकली दैट कन्वर्ट दैट हाई लेवल लैंग्वेज, उसमें जो वो सिंटेक्सेस हैं उनको वो कन्वर्ट कर देता है इन द बाइनरी लैंग्वेज विच इज अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर. उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है 0 1 में. आफ्टर दैट आवर सिस्टम विल परफॉर्म द ऑपरेशन, आवर सिस्टम विल परफॉर्म द वर्क. हमारा सिस्टम वो ऑपरेशन या वो वर्किंग परफॉर्म करता है एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट जो भी हमें चाहिए वो हमें देता है. नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? H stands for hyper, T for text, second T for transfer, and then P for protocol. Hypertext transfer protocol. What is HTTP? Hypertext transfer protocol. It is an application protocol. ये application protocol है that provides the guidelines that any file you can transfer through the world wide web with the multimedia communication. अगर मुझे कोई भी फाइल को मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन की कोई भी फाइल को, मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन मीन्स इसका वीडियोस हो, ऑडियोस हो, ग्राफिक्स हो, GIFs है, एनीथिंग, एनी इमेज, एनी टेक्स्ट, कोई भी है, मुझे वर्ल्ड वाइड वेब www डॉट पे डालना है, तो मुझे क्या है, कुछ प्रोटोकॉल्स दिए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रोटोकॉल्स. हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स के अंदर होता है, वो चेक करता है, उसके बाद ही वो ट्रांसफर करता है. जैसे अब ये मेरी वीडियो है, इसको मुझे वर्ल्ड वाइड वेब पे डालना, मुझे यूट्यूब पे डालना है इस वीडियो को, तो मुझे कुछ प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं, वो यूट्यूब को पता है, वो चेक करता है मेरी वीडियोस को डालने से पहले दैट माय प्रोटोकॉल जो मेरी जो वीडियो है उसके वो प्रोटोकॉल से मैच कर रहा है, देन इट इज ट्रांसफर टू द फाइल, तब उसके बाद वो जो फाइल है वो ट्रांसफर की जाती है. नेक्स्ट इज MIPS. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MIPS? M stands for million, I for instruction, P for per, S for second. Millions of instructions per second. In this, in 1 second, millions of instruction is given to our CPU, Central Processing Unit. I already explained that in the first video. CPU को मैंने फर्स्ट वीडियो में पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है. तो क्या होता है, एक ही सेकंड्स के अंदर मैं अपने CPU को मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दे सकती हूँ. दैट इज डिफाइंड बाय द प्रोसेसर स्पीड. वो कैसे लेता है, वो प्रोसेसर की स्पीड के अकॉर्डिंग लेता है. मेरा प्रोसेसर कौन सा है, ओके. प्रोसेसर बेसिकली क्या होता है, जो मदरबोर्ड पे इंस्टॉल्ड होता है, दैट इज परफॉर्मिंग द ऑल द टास्क इन अवर सिस्टम. उसी की स्पीड के अकॉर्डिंगली ही हमारा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो टास्क परफॉर्म करता है.
इसमें रॉ प्रोसेसिंग पावर होती है जिसके अकॉर्डिंगली वो कैलकुलेशन करता है कि हमारी एफिशिएंसी कितनी तेज है कितनी स्लो है। अगर आप बहुत पुराने सिस्टम से लोगे तो उनकी एफिशिएंसी बहुत धीरे धीरे थी, वो धीरे धीरे काम करते हैं। आजकल जो है वो बहुत फास्ट काम करते हैं। तो वो सब कुछ जो है दैट इज इंस्ट्रक्शंस जो है वो गिवन की जाती है सीपीयू को, दैट इज जिसकी स्पीड है वो कौन डिफाइन करता है, एमआईपीएस आता है कितनी इंस्ट्रक्शंस वो एक सेकंड में कन्वर्ट यूज कर सकता है या कंट्रोल कर सकता है। नाउ दैट इज केबीपीएस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केबीपीएस? K stands for kilo, B for bytes, P for per, S for seconds. Kilobytes per second. And this speed is for the data transfer. ये डाटा ट्रांसफर की वैल्यू है, मींस नेटवर्क यानी कि इंटरनेट अगर मेरा कनेक्टेड है तो वो एक सेकंड के अंदर कितने बाइट ऑफ डाटा इंटरनेट के थ्रू ट्रांसफर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द किलोबाइट्स पर सेकंड। मतलब एक सेकंड के अंदर वो कुछ किलोस डाटा जो 1024 बाइट्स डाटा ट्रांसफर कर रहा है, दैट इज मींस द केबीपीएस। केबीपीएस है उसकी स्पीड, केबीपीएस में चल रही है। ओके, दिस इज अ बेसिकली a bandwidth transmission डाटा ट्रांसमिशन प्लेटफॉर्म। मींस बैंड कितनी बैंडविड्थ प्रोवाइड हो रही है मेरे इंटरनेट के थ्रू, मेरे डाटा नेटवर्क के थ्रू टू ट्रांसमिट द डाटा। नाउ नेक्स्ट इज द एमबीपीएस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमबीपीएस? M is for mega, B for bytes, P for per, S for seconds. Megabytes per second. Again, it is an internet network bandwidth indicator. Today, or we can say that nowadays we are use Mbps speeds. आजकल जो हम यूज कर रहे हैं that is Mbps speeds को ही हम यूज कर रहे हैं। ये डाउनलोड करता है हमारी फाइल्स को थ्रू द नेट। Mbps की स्पीड इतनी होती है कि हम लोग फाइल्स को इजीली डाउनलोड कर पा रहे हैं इन अवर स्मार्टफोन्स, इन अवर सिस्टम्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, पीसीज, हम सभी जगह कर पाते हैं वो बिकॉज ऑफ दिस मेगाबाइट्स पर सेकंड। अगर हमारी स्पीड कम हो जाएगी, केबीपीएस में आ जाती है, तो हम लोग फाइल को सिर्फ ओपन तो कर पाएंगे इजीली, लेकिन डाउनलोडिंग नहीं होती, स्पीड बहुत कम होती है। उसकी जो बैंडविड्थ ट्रांसमिशन है वो बहुत ही मिनिमम होती है, दैट विच कैन नॉट इजीली डाउनलोड द फाइल। बट व्हेन वी यूजिंग mbps यानी कि मेगाबाइट्स पर सेकंड, देन द बैंडविड्थ ट्रांसमिशन इज इंक्रीज, बैंडविड्थ ट्रांसमिशन बढ़ गई है, बिकॉज ऑफ दैट वी कैन इजीली डाउनलोड द फाइल। इसकी वजह से हम डाउनलोड कर सकते हैं। दिस वाज कॉल्ड मेगाबाइट्स पर सेकंड। नाउ नेक्स्ट इज ज़ैड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ज़ैड? J for stands for Java, A for application, and D for descriptor. Java application descriptor. What is this? This helps the Java file to be easily downloaded, or the Java application, the Java games can be easily downloaded on our system. That क्या है? बेसिकली जावा एप्लीकेशन डिस्क्रिप्टर है जो हेल्प करता है जावा फाइल्स को, जावा गेम्स को इजिली हमारी फाइल्स हमारी जो सिस्टम्स के अंदर इजिली डाउनलोड हो सके। Now next is the 3GPP. What is the full form of 3GPP? Three is for the third, G for generation, P for partnership, and P for project. It is a third generation partnership project. What does this mean? इसका मतलब क्या है? It is a basically it develops the protocols for the mobile telecommunication. ये क्या करता है? मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन के लिए जो है एक प्रोटोकॉल डिफाइन कर दिया गया है जो कि हमारे जीएसएम स्पीड्स को, जीपीआरएस स्पीड्स को जो है मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है। 3GPP क्या है? बेसिकली एक मोबाइल ट्रांसमिशन के लिए जो आपको यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द 3GPP। नाउ नेक्स्ट इज द 3GP। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ 3GP? It is a third generation project. 3 for third, G for generation, P for project. It supports a video file formatting which can easily download it on our smartphones, जिसकी हेल्प से हम डाउनलोड कर सकते हैं स्मार्टफोन्स पे अपनी वीडियो फाइल्स को। It provides the video streams of H.263, that is very high. HD speeds होती हैं, HD videos होती हैं, वो हेल्प करता है ये ट्रांसमिशन को। That's all for the today's class. The rest of the full forms we will discuss in the next class. Still you have any doubt you can ask. आज जो हमने कवर करी है that is mainly the ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल या बैंडविड्थ ट्रांसमिशन फुल फॉर्म्स। हमने जो आज डिस्कस करी थी वो हमने की थी ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स की जो
थी हमारी फुल फॉर्म्स या फिर पैकेट ट्रांसमिशन की जो फुल फॉर्म्स. इन द फर्स्ट क्लास वी हैव डिस्कस द IO डिवाइसेस की फुल फॉर्म्स को हमने मेनली डिस्कस किया. स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. थैंक यू.